हेलो वेलकम गाइस। एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स रिटन बाय डब्ल्यू yeats एंड दैट इज सेकंड कमिंग। इस सेकंड कमिंग के को एक्सप्लेन करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे एंड एज यूजुअल आई यूज both languages, Hindi and English, so that it may be accessible to the larger section of the watcher। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहते हैं ताकि ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के लिए इजी हो सके। तो आइए हम सेकंड कमिंग पोएम जो कि डब्ल्यू बी yeats के द्वारा लिखा गया है। एंड डब्ल्यू बी yeats was such a poet who linked the 20th century and before that, I mean 19th century also. So we find the temperament of the romanticist in W. Yeats and the temperament of a modern poets who represent the catastrophic picture of the modern world। तो हम W. Yeats में रोमांटिक पोइट्स के भी टेम्परामेंट और मॉडर्न पोइट्स के भी टेम्परामेंट पाते हैं। रोमांटिक पोइट्स के टेम्परामेंट के रूप में हम उनको देखते हैं कि वो विजनरी हैं, इमेजिनेशंस का भरपूर यूज़ करते हैं। और जब मॉडर्न पोइटिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो 20th सेंचुरी पोइट्री की तरह हम उनकी कविताओं में पाते हैं किस तरह वर्ल्ड वार और कंटेम्प्रेरी जो इवेंट्स हैं उसका इफेक्ट किस तरह पड़ा है, स्पेशली द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वार। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल इन हिज पोएम्स। तो आज हम इनके सेकेंड कमिंग के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। बट बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल, लेट मी मेक इट आउट दैट व्हाट इज रियली द मीनिंग ऑफ सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग का क्या अर्थ है? सेकेंड कमिंग मीन्स री इनकारनेशन। तो टाइटल री इनकारनेशन ऑफ some positive forces, reincarnation of Jesus Christ जो कि पॉजिटिव फोर्स के रूप में इनकारनेट होते हैं, अवतरित होते हैं। एंड इज ऑलवेज द पीपल, ही रिनंसिएट द पीपल फ्रॉम द साइकिल ऑफ, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द सिन। तो इस सेकंड कमिंग पोएम को जानने के पहले Let us peep into the historical background। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम नजर डालते हैं क्योंकि कंटेम्प्रेरी इवेंट्स प्ले द क्रूशियल रोल इन द मेकिंग ऑफ अ लिटरेचर। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट वर दोज इवेंट्स which influenced the making of its mind while writing, or let me say before writing this poem। तो कुछ इवेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसका प्रभाव डब्ल्यू yeats पे पड़ा। इनमें से हम ये देखते हैं, पहला रेफर करेंगे जो हम पॉइंट आउट करेंगे, दैट इज ईस्टर रिबेलियन। Easter Rebellion 1916। W. Yeats was an Irish poet। आयरलैंड हमेशा रिपब्लिक स्टेटस के लिए स्ट्रगल करता रहा है इंग्लैंड से। इसमें ईस्टर रिबेलियन हुआ था, बहुत सारे मस्किलिंग भी थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। दूसरा इवेंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इन्फ्लुएंस्ड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम वाज द ग्रेट वर्ल्ड वार। द ग्रेट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार
first that take place in 1914 to 1918. वर्ल्ड वार का इफेक्ट है। वर्ल्ड वार 1918 में एंड हुआ था और पोएम लिखी गई थी 1919 में। द सेकेंड कमिंग पोएम was written by W. Yeats in 1919। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेजर इवेंट्स हैं इनकी लाइफ के, ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी रहे हैं इस पोएम की रचना में। एक्चुअली ये जो सारे इवेंट्स हैं, इट caused the massacre in the world। आयरिश रेबेलियन में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और वर्ल्ड वार में भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। सो ये जो मास किलिंग देखने के बाद W. Yeats, being a sensitive person, was very much shocked and he had almost lost his hope in the positivity of the world। जैसा कि हमेशा होता है सेंसिटिव लोगों के साथ। तो इस पोएम में इन्हीं चीज़ों का इफेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन being the man of spiritual bent of his mind, it cherished some hope for the rebirth of the forces like Jesus Christ that may resettle everything which has been turned down, which has been disturbed and disrupted। तो W. Yeats एक सेंसिटिव व्यक्ति होने के कारण ये एंटिसिपेट करते थे, ये होप करते थे कि ऐसे फोर्सेस एक बार फिर से अवतरित होंगे जो इस अव्यवस्थित सिस्टम को, तंत्र को फिर से स्थापित करेंगे। तो इट्स क्वाइट नेचुरल, नॉट ओनली इन क्रिश्चियनिटी, वी फाइंड इन एवरी रिलीजन्स द रीइंकार्नेशन ऑफ some Messiah that makes everyone rid of the side effects of the contemporary negative forces। तो इसके लिए हमें मिथ की जानकारी, मिथिकल इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने होंगे, उसको जानने होंगे। इसमें हम थोड़ा सा रिफ्रेश देते हैं मिथिकल इंफॉर्मेशन की। एक्चुअली 2000 पेशी में होमर ने इलियड में ऐसा ही एक कंसेप्ट डेवलप किया था, जो लेडा एक फिगर है। लेडा जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में हेलेन की मदर के रूप में जानी जाती है, was seduced by Zeus in the disguised form of the swan, or in the union of Leda and Zeus, the two daughters were born. One of them was Helen, another Clytemnestra। So, age of Leda and Zeus की कल्पना की गई थी। होमर ने इलियड में इसको रिफर किया था, उसमें इलियड में इसको बारे में डिटेल है। उसके एंड है और इसके बाद एंड आफ्टर द एंड ऑफ द एज ऑफ लेडा एंड जेस द क्रिश्चियनिटी बिगैन। तो ये कंसेप्ट है कि आफ्टर ईच 2000 years there had been the beginning of new era। तो ये जो पोएम है इसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है, रीमटेरियलाइज करती है। तो हम अब देखते हैं इस पोएम्स के एनालिसिस करते हैं। बट बिफोर मेकिंग एन एनालिसिस
are explaining the poem. Let me read the text. The text, while reading the text, we can just concentrate on the word, the imageries which the poet has used in it. तो आइए हम टेक्स्ट पढ़ते हैं. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. The things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all convictions, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming? Hardly are those who doubt, when a vast image out of spiritus mundi troubles my sight. Somewhere in the sand of desert, a shape with lion body and the head of man, a gaze blank and pitiless as the sun is moving its slow thighs, while all about it reel shadows of the indignant desert bird. The darkness drops again, but now I know the 20th century of stony sleep were vexed to the nightmare by a rocking cradle. And what rough paced its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. तो इस पोएम के टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आइए हम कुछ इमेजेस की बात करते हैं. इसमें जो इमेजेस है, द फर्स्ट इमेज इज द टर्निंग एंड टर्निंग द वाइट गाय. इस इमेज को समझें, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट the state of human beings and their approach to the life that has been reflected by the poet to the image of widening gyre. So I am widening gyre जिसको जैर भी पढ़ते हैं. जो gyre है इसका अर्थ होता है स्पाइरल. स्पाइरल स्प्रिंग नुमा होता है, स्प्रिंग शेप का हम कह सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली स्पाइरल शेप. दिस इज द शेप. टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग gyre. Turning and turning the widening gyre, this is the movement. It reflects the movement of the gyre that is here. धीरे धीरे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. Its movement is upward. It's moving away from its point, spreading away. इसके the lowest end, इसमें दो वर्ड हुआ. The falcon cannot hear the falconer. इस इमेज को हम समझते हैं कि what is this actually the poet wants to communicate. falcon जो शब्द है, falcon एक तरह का ईगल होता है that is trained by human beings.
and falconer is the trainer. जो falconer शब्द है इसको हम ट्रेनर से एसोसिएट कर सकते हैं, जो ट्रेन करता है। और falcon का काम क्या है? To pounce upon the prey. शिकार करते हैं लोग इसकी सहायता से, लेकिन एक वेल ट्रेन होने के बाद, जिसे ट्रेन करता है ह्यूमन बीइंग। तो सिंबॉलिकली जो फैल्कन का जो मेन सिंबल है, दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअलिटी मीन्स बौद्धिक स्थिति मनुष्य की। और फैल्कनर का दूसरा जो इसमें सिंबॉलिक मीनिंग आ रहा है, दैट इज द स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी भी में से इंटीग्रिटी, spirituality and religious aspect. Falcon cannot hear the falconer. It means the intellectuality of human beings has grown to so much extent that now it has turned to be the out of control. It has turned to be out of spiritual and religious control. तो इस तरह से बौद्धिकता हावी हो गई है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और रिलीजन, both of these approaches of human beings have been lost now with the growth of intellectuality. तो बौद्धिकता के कारण ये दोनों चीजें हो चुकी है, and this stage has been suggested by the poet with the image of falcon, which is not able to hear the voice of its trainer. बौद्धिकता के कारण धार्मिक और आध्यात्मिक सोच का ह्रास। And what is the effect of that? That the things fall apart, disintegrated. Everything is disintegrated. हमें ध्यान देना होगा कि इस पोएम में जो वर्ड की पिक्चर्स W. Yeats के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, that is the disintegration of the whole world. Means nothing is in its organized way, integrated way. So things fall apart, and the center cannot hold. See the in figure of kayak, that is widening. इसमें center cannot hold means the loss of control of human beings over their intellectual growth. Because of their intellectual growth, the center cannot hold, so the things fall apart. चीजें बिखर गई हैं, लोगों का कंट्रोल खत्म हो गया है। And what is there in the whole world? Mere anarchy is loosed. The world, mere anarchy is loosed upon the world. It means चारों तरफ केवल फैल गई है। This is more or less the condition which nowadays we find in our world. Anarchy, अराजकता, जो कि आजकल हम सीधे सीधे देख रहे हैं, W. Yeats ने इस पोएम में दिखाया है। Mere anarchy is loosed means everywhere the anarchic activities are being done by the human beings. No humanity is seen anywhere in this world, or the blood-dimmed tide, which is a result of massacre, जो कि हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के आफ्टरमैथ स्पेसिफिक कंडीशन क्या दिखा रहे हैं, चारों तरफ खून,
कि नदियां बह रही हैं. So it is because of the massacre that was caused by the World War. Everywhere we find just the bloodshed. The ceremony of innocence is drowned. Positivity, जो simplicity है, इसका respect नहीं दिया जा रहा है. It is getting no regard from the people all around. The ceremony of innocence, simplicity, is drowned, is no more. खत्म हो चुका है. अच्छे लोगों का सम्मान, अच्छे लोगों का महत्व, सिंप्लिसिटी का इम्पोर्टेंस. सो इट इज नो मोर नाउ. और ड्राउंड इमेज इसलिए थोड़ा सा लॉजिकली फिट हो रहा है क्योंकि ब्लड dim tide has already been mentioned here by the poet. So because of the massacre, because of the bloodshed everywhere, because of the negative forces prevailing everywhere in this society, no simple people, no simple person is able to survive. तो ऐसे लोग survive नहीं कर पा रहे हैं. चारों तरफ खून खराबा हो रहा है. The best lack convictions, all convictions. The best, once again एक बार फिर से किड्स ने पॉजिटिव फोर्सेस की बात की है कि the best lack all convictions while the worst are full of passionate intensity. जो अच्छी चीजें हैं, जो अच्छी सोच वाले हैं, actually they have lost their trust in the people. People have stopped trusting in the positivity. And in which do they trust? तो फिर किसमें उनका विश्वास है? The worst are full of passionate intensity. जो बुरी चीजें हैं, जो most negative forces हैं, they are now being welcomed and greeted by the people. अब उनका स्वागत हो रहा है. Passionate intensity, उनके प्रति लोग इमोशनल दिखा रहे हैं. They are being responded, negative forces are being responded by the people with so much of passions, intense passions. तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो एक्चुअल वर्ड है इसको दिखाया गया है. और यहाँ पे हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो थर्ड लाइन में द थिंग्स फॉल अपार्ट जो वर्ड है, इसी से चिनुआ अशीबी ने एक नॉवेल लिखा है द थिंग्स फॉल अपार्ट. तो वो टाइटल इसी पोएम से लिया गया है. तो इट मे बी आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस आल्सो दैट द नॉवेल थिंग्स फॉल अपार्ट written by Chinua Achebe. The title of this novel has been taken from where? So इसका उत्तर होगा the second coming, W. Yeats के. तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें W. Yeats ने वर्ल्ड की एक्चुअल कंडीशन को दिखाया है और ये दिखाया है कि द करप्शन, नेगेटिविटी, इनह्यूमैनिटी, all these negative forces are at its acme, at its extreme level. हर चीज एकदम चरम पर पहुंच गया है. और एक सेंसिटिव पर्सन होने के कारण, एक स्पिरिचुअल सोच होने के कारण W. Yeats भी एक एंटिसिपेशन उनके अंदर ये हो रहा है, वो कल्पना कर रहे हैं, उनके अंदर एक इमेज आ रहा है कि then if everything, every negative forces is at its peak, then there may be the probability of the reincarnation also. तो इसलिए वो कहते हैं surely some revelation is at hand. Revelation, exposition हम कह सकते हैं.
प्राकट्य कह सकते हैं, रिवील का नाउन है, रेवलेशन। श्योरली सम रेवलेशन, यहाँ पे एक तरह से ये इनकारनेशन की बात कर रहे हैं, अवतरण होने की बात कर रहे हैं किसी फोर्सेस की। Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. तो इन दोनों लाइनों में देखिए वो एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक संभावना की बात कर रहे हैं कि आफ्टर सीइंग सच massacre the negative forces, its extremity, W. Yeats imagine that there may be some forces, there may be the incarnation of some positive forces, Messiah. So surely some revelation is at hand, surely the second coming is at hand. The second coming, इस लाइन को हम ध्यान दें, यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक मार्क है, the second coming. ये जो फीलिंग्स है, it may be an outcome of joy because of the probability of the reincarnation. It may also be an outcome of his puzzled state of mind. The second coming, hardly are those words out. और उसी state of mind की वजह से है कि W. Yeats he refers to his inability to express, उसकी अभिव्यक्ति में वो असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं hardly are those words out. When a vast image out of Spiritus Mundi, Spiritus Mundi, the world of spirits, the world of spirits. ऐसा माना जाता है कि there may be the world of spirits where the spirits of the different great persons are over there. So out of those different spirits, he imagines a huge image, a huge figure. ऐसा figure जो कि terrific है, that makes the poet unable to speak out. A vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. यहाँ पे पर्सनली देखिए W. Yeats ने कहा कि he feels a bit of puzzle and trouble because the image which he imagines, which he get as a vision in his mind, is very much terrific. इसलिए troubles my sight, वो इमेज देख के वो थोड़ा सा बेचैन होते हैं क्योंकि that image looks more barbaric, इसलिए ये कहते हैं troubles my sight. Somewhere in the sight of desert, a shape with a lion body and the head of man. ग्रीक मिथ में इसे स्फिंक्स कहा गया है. स्फिंक्स जिसकी शरीर शेर की तरह थी, लेकिन सर जो है उसका शेर की तरह था. इस इमेज को भी ग्रीक मैथोलॉजी में मर्सिलेस और मैलिशियस दिखाया गया है ग्रीक मिथ में. हालांकि इजिप्टियन में, इजिप्ट मिथोलॉजी में, इजिप्ट मिथ में इसको बेनेवोलेंट माना गया है. इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन इजिप्टियन मिथ एज द गार्जियन ऑफ द टेम्पल. लेकिन उसी इमेज की कल्पना करते हैं ये. और लास्ट की जो प्रोसीडिंग लाइंस में है, जो सक्सेसिव लाइन में, ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस as the sun, a gaze staring. In his eyes, there it reflects the cruelty, the fierce, एक भयानकता झलक रही है उनकी आंखों से. A gaze blank and pitiless as the sun. Sun also reflect here.
a terrific state. तो उस तरह से वो इमेज की कल्पना कर रहे हैं जिसकी आंखों में बड़ा भयावह जो देखने से लोग डर जाए, ऐसी इमेज की वो कल्पना किया है। तो ए शेप विद द लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, क्यों कल्पना किया? क्योंकि दिस इज द एज which is full of barbarism, barbaric people are there, करप्शन बढ़ गया है, इसलिए ऐसे फोर्सेस को कर्व करने के लिए हम कह सकते हैं, कंट्रोल करने के लिए कह सकते हैं, ऐसी इमेज की कल्पना की है डब्ल्यू बेट्स ने इस वर्ड में। तो इज मूविंग स्लो थाइज while all about it the real shadows of the indignant desert bird, indignant desert bird, again the restlessness। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से हम कह सकते हैं वही डायग्राम, टर्निंग एंड टर्निंग वाइडनिंग गायब को दूसरे रूप में दिखाया गया है कि अब वही बर्ड, वही चीज़ें बेचैन हो रही, सारी नेगेटिव फोर्सेस आर नाउ getting more and more restless because of the change is due and it is about to take place in the society. So all the negative forces are in now trouble. The real shadows of the indignant desert bird, the darkness drops again, means all of a sudden the whole world overflows with the negativity, negative emotions of the people. इसलिए एक बार फिर से ये चरम पीक इस पे आ जाते हैं और उसके बाद करते हैं, but now I know the 20th century of stony state were vexed to the nightmare by a rocking cradle। जो क्रिश्चियन एज रहा है स्टोनी स्लीप के रूप में इसको कल्पना किया, मीन्स इट हैज बीन लाइक डोरमेंट नाउ बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी। तो ये सारी चीज़ें एक बार फिर से स्ट्रीम पे आने के कारण इन्होंने कहा कि 20th century of stony sleep were vexed to nightmare। नाइटमेयर फिर से वही बात कर रहे हैं जो कि दुःस्वप्न कह सकते हैं, भयानक स्वप्न के तरीके का, ये सब एकदम परेशान से हो गए हैं, एकदम उथल पुथल हो गए हैं, टॉपल डाउन, द होल सिस्टम हैज बीन टॉपल डाउन नाउ। बट व्हाट डज ही इमेजिन? इमेजिन व्हाट रफ बीस्ट इट्स आवर कम राउंड एट लीस्ट। ये जो स्फिंक्स इमेज है भयानक, अब ये इसकी स्थिति आ गई है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, slouches towards Bethlehem to be born again, बेथलम की ओर, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है, धीरे धीरे उस ओर जा रहा है। और इस तरह से एक बार फिर से संभावना हो गई है बर्थ की, एक ऐसे व्यक्तित्व का, एक ऐसे फोर्स का जो फिर से इस्टेब्लिश करेगा, एक नया एज ले आएगा, ऐसी ही कल्पना की गई। तो इस पोएम को जब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, in the second part he actually represents a vision, एक ऐसा विजन देते हैं जो कि पॉजिटिव विजन हम कह सकते हैं कि he hopes to get everything settled again which has now grown to the extreme level of disintegration। सब कुछ टूटा है, बिखरा है। इस तरह से ये विजन हम पाते हैं कि सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम। तो अलग अलग चीज़ें एक बार फिर से हम इसको शॉर्टकट में रिकैप करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पाते हैं कि देयर इज द कंक्रीट पिक्चर ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ करप्शन, इनह्यूमैनिटी, डिसइंटीग्रेशन। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पोएट्स विजन, पोएट्स के विजन को रिफ्लेक्ट करता है, एक ऐसी शक्ति के उदय का, एक ऐसे फोर्सेस के रिन करने का, रिबर्थ का, दैट इज सपोज टू हैव द पावर टू रीसेटल द डिस्टर्ब, द डिसइंटीग्रेटेड condition of the world. So it is very very important poem and I hope you must have got
some vision, some informations that will definitely help you. तो एक बार फिर हम आप सबसे करते हैं कि इस पोएम को पढ़िए एंड डेफिनेटली विल फाइंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और चैनल अगर अभी भी ना सब्सक्राइब किया हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट with those who wants to get some information about the poem. Thank you.